Good morning, everybody. Today we are going to study the process of planning. We have so far covered the features, importance, limitations, and now we are going to do the process of planning. It's a very interesting, topic to study. Please learn it like a story. The moment you learn it like a story, you get into the flow of the process. And mind you cannot change the steps of the process because process means it has to go in the chronological order. कहीं ना कहीं इसको तुम अपनी डेली रूटीन में या किसी एक एग्जाम्पल को अपने माइंड में रखकर इस प्रोसेस को समझ लो. इट बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड. द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ सेटिंग अप प्लानिंग प्रोसेस इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. Children, objective is very important because we understand that objective is the end. When you are thinking, you are foreseeing something, you're looking into the future, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमने कहाँ पहुँचना है. What is the end? So objectives are very, very important. They tell you where you have to reach. Objectives should be very clear, very specific, right? If they are very specific and they are normally set by the top level management, it becomes very easy to interpret, implement and convey the same objectives to all the departments. Once the objective is set by the top level management, it gives you a direction. Then all the departments अपने objectives अपने level पर set करते हैं. यही objectives trickle down to the lowest level in an organization. And once it is conveyed to each and every employee in the organization कि हमने क्या target set किया है, हमने कहाँ पहुँचना है, हमने कैसे पहुँचना है, टॉप लेवल मिडिल ऑपरेटिव वर्कर्स को अगर ये ऑब्जेक्टिव छोटा छोटा करके नीचे तक क्लियरली बता दे, हर एक को इसको अचीव करना बहुत इजी हो जाता है बिकॉज एवरी रोल बिकम्स वेरी वेल डिफाइंड. आई हैव रिटन अ वर्ड हियर ऑन द टॉप. ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट. व्हाट डू यू मीन बाय स्मार्ट? वेरी स्पेसिफिक, वेरी मेजरेबल. अगर मैंने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया मेरी कंपनी के लिए कि आने वाले साल में 2021 आई एम गोइंग टू इंक्रीज माई सेल्स बाई 20%, यहाँ दिया हुआ है. सो माई ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर, very specific, increase in sales by 20%. It is measurable. After April 2021, I can measure my objective कि मैंने 20% sales बढ़ाई कि नहीं. It should be achievable. I have to look into myself. Can I achieve it or not? It should be realistic. अब COVID-19 की situation देखकर मुझे नहीं लगता कि कोई organization ये set कर सकती है objective. Unrealistic हो जाएगा. It should be time bound. टाइम बाउंड मतलब बाय अप्रैल 2021. टाइम बाउंड है. अगर तुम कोई भी चीज टाइम बाउंड में करोगे तो डेफिनेटली देयर विल बी एन अर्ज फॉर यू टू फिनिश इट विद इन दैट टाइम पीरियड. Coming to the second step of planning process, developing premises. I would recommend you to associate every step with a word. For example, setting objective. Remember, objective is a target, an end, a goal which you have to achieve. Premises is assumptions. Assumptions मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई assumption होनी चाहिए या कोई ना कोई basis होने चाहिए जिसके बेस पर वो चीज को प्लान कर सकते हैं. For example, now if I talk about business environment, this COVID-19 has become a very big opportunity for many of the garment industries in Ludhiana. Now there are many of them are जिनकी production नहीं हो रही in the routine goods that they were manufacturing. They're all manufacturing the NH5 masks. Not even NH5 but normal masks produce कर रहे हैं. Many of the industries in Ludhiana are manufacturing the PPE kits. So all this becomes an opportunity. अब ये उन्होंने प्लान कैसे किया? क्योंकि पहले तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी अवेल की, फिर उन्होंने प्लान किया. अब ये प्लान क्यों किया? क्योंकि उनके पास एक बेस है. बेस क्या है? उनके पास मशीनें हैं, उनके पास लेबर है, उनके पास कपड़ा पड़ा हो अंदर. सो दे स्टार्ट मेकिंग. या उनको पता आने वाले टाइम में इन सब चीजों की बहुत जरूरत है. दे हैव सम फोरकास्ट इन देयर माइंड. सो जब भी कुछ भी तुम प्लान करते हो, यू नीड अ प्रीमाइसेस, अ बेस, एक फाउंडेशन जिसके बेस पर तुम वो पॉलिसी बना सकते हो. अब सरकार ने जैसे कहा कि रेपो रेट कम हो गया, दैट मीन्स द लोन्स ग्रांटेड विल बी हायर. सो दिस बिकम्स अ बेस. सरकार ने कह दिया जी टैक्सेस कम हो गए. सो दिस बिकम्स अ बेस फॉर यू टू टेक अ डिसीजन इन द फ्यूचर एज टू हाउ एंड व्हाट टू प्लान. कमिंग टू द थर्ड स्टेप. चलो जी, तुमने एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, डिसाइड कर लिया हमने ये करना है. उसके बाद तुमने ये देख लिया कि हम लोग किस बेस पर कर सकते हैं.
अब तुम देखोगे तुम्हारे पास ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या है। मेरी फैक्ट्री में मशीनें पड़ी हुई है, मेरी फैक्ट्री में बहुत धागा पड़ा हुआ है, मेरी फैक्ट्री में बहुत कपड़ा पड़ा हुआ है, और मेरे पास 10-15 लेबर है जो मेरी फैक्ट्री के अंदर ही रहते हैं। अरे ये सारी चीजें इनफ है मेरे लिए टू डेवलप बेसिस टू डिसाइड समथिंग इन द फ्यूचर। सो आई लुक एट द ऑल्टरनेटिव्स। अब जितना कपड़ा पड़ा है उसके साथ मैं क्या बना सकती हूँ? कैन आई मेक ओनली द मास्क? कैन आई मेक ओनली द PPE किट्स? कैन आई मेक some hand gloves? I have to look into the list of alternatives. हमने यहाँ alternatives को evaluate नहीं करना, हमने सिर्फ एक लिस्ट बनानी है कि हम ये काम कर सकते हैं। Sometimes you may come up with something innovative. You may look into many things. देखो जब तुम सोचने बैठते हो ना, बहुत कुछ तुम्हारे माइंड में आता है। चलो ये भी बना लेते हैं, चलो ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। कोई जरूरी नहीं हर चीज feasible होगी, but you can make a list of all the possible alternatives available to you which you can use within the given resources you have. Moving on, once you have made a list as to तुम क्या क्या कर सकते हो, then you need to evaluate each and every alternative. You have to look into the pros and cons, positive, negative, merits, demerits. हर चीज को तुम evaluate करोगे. Children, remember, everything is not possible. You have to look into your resources. In +1, I remember you guys did feasibility studies. Whenever you are planning to choose an alternative, you just can't select it. You need to do a lot of feasibility studies. तुमने देखना कि पैसा कितना लगना है, तुमने देखना है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है कि नहीं, तुमने देखना है कि मेरे पास लेबर है कि नहीं है। तो जितने भी रिसोर्सेज तुम्हारे पास है, जितने भी ऑल्टरनेटिव्स तुमने चुने हैं, हर एक ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करो। Evaluate in terms of investment, evaluate in terms of earning per share, evaluate in terms of taxes, interest, dividends, हर चीज। फ्यूचर में जाके मैं 10 साल के बाद कहूंगा, मैं 2 साल के बाद ये तो ना हो कि फैक्ट्री बंद करनी पड़े मुझे ये ऑल्टरनेटिव से। सो evaluate, positive and negative critical evaluation is important. You have to even look into the feasibilities. उनकी consequences क्या? Are they economically, technically, socially viable or not? Once you have done all this, so I'm sure children, अगर तुमने listing, identifying में 10 प्रोडक्ट सोचे होंगे, तुम इवैल्यूएशन के बाद तुम सिर्फ 2 या 1 प्रोडक्ट पर आ जाओगे, राइट? नेक्स्ट इज यू हैव टू सेलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव। चलो जी, अब मेरे पास 10 थे, मैंने अभी 4 फाइनल किए कि इनमें से मुझे चूज करना है। देन आई नीड टू select one of the alternatives or a couple of alternatives or a combination of alternatives depending upon my feasibility, depending upon my profitability, and मुझे ये भी माइंड में रखना है कि जो प्लान मैं कर रही हूँ, जो प्रोडक्ट में बना रही हूँ या जो वेंचर में कर रही हूँ, उसमें मेरे पास लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो। मतलब इसको अपनाने के बाद मुझे बाद में पछतावा ना हो कि ये ऑल्टरनेटिव क्यों चूज किया। कभी कभी managers use their personal experiences, they use their judgment at times, sometimes they look into something new. See, if you watch the television nowadays, every day something new is coming up. Every day something new, some new alternative. Now you've come up with the plasma therapy, right? So many alternatives are coming up. Sometimes the doctors give their personal experiences, they give their judgments, sometimes it's based on intuition, but then they have to experiment. They have to select some alternative or the other. At times we have to select a combination of alternatives so that we try to make our project or our course of action a little feasible. Once you've selected your alternative, wonderful. Okay, this is what I'm going to be doing. I'm going to be launching a new product in the year 2021 because it's going to be the onset of your spring and the onset of your summers in the May. So this is the drink or the beverage I'm going to be launching. This is the product I'm going to be launching. तुमने finally select कर लिया। अब ये नहीं कि तुम select करोगे तो तुम अभी implement करोगे, नहीं। Launch तुमने अप्रैल में करना है, लेकिन तुमने अभी ही you have to work out how to implement the plan. You have to put your thought process into action. You have to see what is to be done. Not what is being done, what is to be done. Launching a new product is not all that easy, children. तुमने देखना है मैंने कितनी प्रोडक्शन करनी है। Do I have the capacity? Do I have the production unit? Do I have the staff? Do I have the plant and machinery? Do I have the technology?
डू आई हैव द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, ये सब कुछ तुमने बारीकी से प्लान करना है। इसको कहते हैं इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। जो ऑब्जेक्टिव तुमने सोचा उस ऑब्जेक्टिव को अगर तुमने इम्प्लीमेंट करना है तो तुमने यहां से शुरू करना है। एक बार तुमने इम्प्लीमेंट कर दिया, डिसाइड कर लिया कि अप्रैल में हमें लॉन्च करना है, बट ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्शन हैज टू स्टार्ट समवेयर नाउ वेरी सून, सो देन यू हैव टू मॉनिटर। जब भी हम वर्ड फॉलो अप कहते हैं इट मींस मॉनिटर। मॉनिटर मींस चेक, चेक मीन्स टू कंट्रोल। तुमने हर जेंचर पर देखना है कि क्या मैं ये कर रहा हूं या कर रही हूं, ये सही है कि नहीं। जहां तुम्हें लगा कि तुम अपने टारगेट, अपने सेट ऑब्जेक्टिव, सेट गोल, सेट डिसीजन से तुम हट रहे हो, तो यू हैव टू क्विकली ट्राई टू फ्लेक्सिबली चेंज इट। यू हैव टू मॉनिटर ये क्यों हो रहा है, गलत हो रहा है, क्योंकि जब तुम लास्ट में जाके अप्रैल में देखते हो देन द एंटायर प्रोसेस में बी अ लिटिल difficult. Let's quickly recapitulate, and now this time when I'm recapitulating children, I'm going to recapitulate with your example of 10th standard to 12th standard or probably 12th standard and above. Now the first thing is setting an objective. I think perhaps the first objective for you is after your 12th standard, where is it that I presume all of you have got wonderful 95 plus in your plus 2. I'm not going to set an objective for plus 2. Let us say you are almost done with your plus 2. What is the next thing you do? You set an objective. Which university to go, right? Which university? You have to take admission in 2021 June perhaps. So which university to go is very important. You have to specify very clearly which university you want to go. After that, you need to decide why you want to go there, how you can go there, what are your development premises. Maybe your parents allowing you to go there. Probably you have the finances, you have the percentage. Then you will look at the various universities. You will make a big list. नेट पर सर्व करोगे, एक बड़ी लिस्ट बनाओगे कि मैं यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ जा सकती हूँ. Then you will select an objective. You will evaluate. You will evaluate each and every university. So अगर तुमने 10 को शॉर्टलिस्ट किए, इवेल्युएट करने के बाद तुम्हारी 2 या 3 बच जाएंगी. उसके बाद तुम सेलेक्ट करोगे. जब तुम्हें कंडीशनल आ गई, 3 की कंडीशनल आ गई, अब तुम सेलेक्ट करोगे कि मुझे ये यूनिवर्सिटी, ये वाली यूनिवर्सिटी में ही जाना है. Then you will decide how to go to that university. Probably you will follow up with its process, and then finally once you reach there, you will check whether you are satisfied coming there or not, you are happy being here there or not.